Hello and welcome to the first interactive session on structure elucidation. This is your next problem. Molecular formula C11H14O3. IHT calculate करें. So five. 11 to 22 plus 2, 24 minus 14 divided by 2, 5. Okay. So we have the carbon 13 Fine. NMR and the proton NMR data. In carbon 13, we have the depth data as well. So you can differentiate between CH3, CH2, CH, and the quaternary carbons. So we have two CH3 signals, two CH2 signals, two CH, and three quaternary carbons. But if you look at this molecular formula, there are 11 carbon atoms. And if you count these carbons, there are 3, 5, 7, 9 carbon atoms, right? So what could be the possible reason why we don't have 11 signals? सर इसमें बेंजीन रिंग है और इसमें Hmm? दो हाइड्रोजन के सिग्नल्स कपल्ड है दो हाइड्रोजन Hydrogen, hydrogen तो अभी डिस्कस ही नहीं किया. I'm talking about the carbon. सर दो कार्बन के जो केमिकल एनवायरनमेंट वो हैं Yes, there might be two carbon atoms having similar chemical shift values, similar magnetic environment, and that is why we see only 9 carbon signals. We will see that later. Okay, कौन से carbons हैं जिनकी chemical shift value same है. So we have the proton NMR data here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 signals could be seen. The first one is a triplet at 2.5. Integration is 2. First you count the integrals. 2 plus 2, 4, plus 3, 7, 10, 12, and 14. So 2 would be in 2 protons. So it's a 2 proton triplet at 2.5. The coupling constant is 7 hertz. And then again we have a 2 proton triplet at 2.75 with the coupling constant value 7.0 hertz. Now, the first information that you get from this data is that these two signals have the same coupling constant, which means that these two protons might be coupled with each other. So it's a 2 proton signal appearing as a triplet. So what it could be, 2 proton means a CH2, and why it is appearing as a triplet. सर इसके जो नेबर में है उस कार्बन पे दो प्रोटॉन है दैट आर केमिकली इक्विवेलेंट chemically and magnetically equivalent. So That's why it's the signal triplet. it could be this situation. So if we are talking about this signal, so this CH2 in the red is for this CH2 right here, and it's appearing as a triplet because of a neighboring CH2. So it has two hydrogens in the neighborhood. That is why it's appearing as a triplet. और इसकी confirmation बिल्कुल next signal से भी है because we have another CH2 having the same coupling constant. ठीक है, तो इस CH2 को अगर आप consider करें, so it has another CH2 in the vicinity. It's the same fragment actually. ठीक है, तो ये दोनों CH2 एक दूसरे के साथ कपल होकर आपको इतनी coupling constant वैल्यू दे रहे हैं और दोनों ट्रिपलेट्स होंगे. अब दोनों ट्रिपलेट्स है तो मतलब उनके इस CH2 के लेफ्ट पे और इस CH2 के राइट पे कोई हाइड्रोजन्स अटैच नहीं है. मींस देयर कुड बी अ हेटेरोएटम और it could be a quaternary center that we will see from the chemical shift values later on. The third signal is a 3 proton singlet at 3.55. ये क्या होगा? सर मिथाइल होगा जिसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है. Which electronegative atom? मिथॉक्सिस ऑक्सीजन होगा. Oxygen. Okay. So its chemical shift value tells you that this is CH3 attached to an oxygen, so it's a methoxy group right here. And then we have another 3 proton singlet at 3.65. So the chemical shift values are closer. Again, it's a singlet, so it could be another methoxy group. So this molecule has two methoxy groups and a CH2 2 carbon fragment here. Then in the end we have two signals again for 2 protons
each, and the coupling constant values are the same, 8.5 hertz, both appearing as doublets. And the chemical shift values tell you that they are Aromatic. 6.8 or 7.2 पे हैं. So these are aromatic protons appearing as doublets. Integral 2. 2 here means a CH2. So does this 2 also mean a CH2? No, CH. Yeah, it's similar to the previous example that we discussed the other day when you have disubstituted benzene ring and it's a para disubstituted benzene ring. Usually you have this sort of situation. You have two signals for each with an integral 2. Coupling constant values are the same, so it means they're coupled with each other and both are appearing as doublets, right? So we have a para disubstituted benzene ring again, right? So from this benzene ring, now you can tell which of the two carbon atoms will have the same chemical shift values. It has 4 CH carbons and 2 quaternary carbons. If I call it 1, and this is 2, this is 3, and this is 4. So which of these, okay, 5 and 6, which of these 6 carbons will have the same chemical shift value? So 1 2 की same होगी और 3 4 की. No, 1 Okay. 4 and 2 3. 1 4 and 2 3. 1 4 and 2 And 3. 2 3, yes. See, these are this is a disubstituted benzene ring, para disubstituted benzene ring hai. But the substituents attached to these two carbons are different. And when substituents are different, so these two carbons will have a different chemical as well as magnetic environment, so their chemical shift values will be different. Okay, so it cannot be these two of these quaternary carbons. It could only be the CH carbons. And just like the protons here, we have 4 protons but 2 signals, meaning that 2 protons have the same chemical shift value here and 2 protons have the same chemical shift value here. Similarly, the carbons will have the same chemical shift value here. So 2 and 3 will have the same chemical shift value, and 1 and 4 will have the same chemical shift. So now you know that these are the aromatic protons which have similar chemical shift values, और वो CH हैं. तो अगर CH आप देखें तो 2 ही सिग्नल हैं यहाँ पर, 108 और 130. That means these are aromatic protons or carbons in the aromatic region, right? अच्छा, कार्बन वैल्यूज अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको कार्बन स्केल का भी आइडिया हो जाएगा. वी हैव 2 CH3 groups and both are in methoxy so you can see their chemical shift values are 50 and 54. So now this is an indication, or you can have a rough idea of where these carbons will appear in the carbon-13 spectrum when these carbons are attached directly to oxygen atoms. Protons का तो आपको पता है कि ये region होगा, these 3.5 या 4 इसके बीच में कहीं पर आपको सिग्नल नजर आएंगे. Carbons आपको इस region में नजर आएंगे. If CH2 is a methylene carbon is attached to an oxygen, उसकी वैल्यू कहाँ पर जाएगी? Upfield होगी या downfield होगी as compared to these? सर मिथाइलिन की डाउनफील्ड होगी थोड़ी. Downfield होगी. So usually आपको 60 से ऊपर मिथाइलिन के कार्बन्स नजर आएंगे if they are attached to oxygens. ठीक है, तो CH2 अगर आप देखें यहाँ पर कोई भी 60 से ऊपर नहीं है. इसका मतलब है कि ये जो 2 CH2 हैं इनके लेफ्ट और राइट पे ऑक्सीजन्स नहीं है. ठीक है, so that's sure. If CH is directly attached to oxygen, where will that carbon appear in the carbon-13 spectrum? That will appear further downfield than the CH2. So usually 70 से ऊपर या even sometimes 80 पे भी नजर आ जाते हैं. और अगर quaternary carbon oxygen के साथ हो, that usually is above 80. तो ये एक trend है. आप मुख्तलिफ carbon atoms को differentiate कर सकते हैं if they are attached to oxygen या नाइट्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कार्बोनिल के साथ अटैच हो, उसका भी यही ट्रेंड फॉलो होगा.
So now we have these four fragments. Actually, these two, they show the same fragment. Then we have the two methoxy groups and a disubstituted benzene ring. Carbon atoms count करें, we have 1, 2, 3, 4 plus 6, 10 carbon atoms. In the molecular formula, we have 11 carbon atoms. Hydrogens count करें, so we have 2, 4, 7, 10 plus 4, 14. So hydrogens पूरे हैं. Oxygen count करें, so we have 2 oxygens. So we are deficient of 1 oxygen and 1 carbon. एक कार्बन एक ऑक्सीजन क्या हो सकता है? तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, कार्बोनिल. कार्बोनिल हो सकता है. So there could be a carbonyl. ठीक है. अब ये हमने जो डाटा प्रोवाइडेड है उससे हमने ये फ्रैगमेंट्स बनाए हैं. वी आर नॉट श्योर येट, वो एंड में हम देखेंगे जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको दोबारा टैली करेंगे विद दिस स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो वी हैव दिस डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, जिसके साथ फ्रैगमेंट्स हमने कनेक्ट करने हैं. ठीक. अच्छा, कैन वी कनेक्ट दिस methoxy टू एनी ऑफ दीज टू कार्बन एटम्स? यस सर, ये जो 2.75 का जो ट्रिपलेट है इसके साथ, क्योंकि ये डाउन फील्ड जा रहा है. डाउन फील्ड जा रहा है. ओके. और कोई? Can we connect any of these methoxy groups to any of these two carbons? सर ये 7.2 के साथ भी तो ऑक्सी हो सकता है, ये भी तो डाउन फील्ड है. No, 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 ये तो aromatic है ना, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो. Yes? We cannot connect this methoxy to any of these two carbons. Why? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया. Look at the chemical shift values of these two CH2s, 30 and 35. That doesn't tell you that any of these CH2 carbons is directly attached to oxygen. अगर ये CH2 ऑक्सीजन के साथ ये वाला या ये वाला कनेक्ट होता तो इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कहाँ जाती? It would have been 60 or more than 60, 60, 62, 65. इस रेंज में आपको ये CH2 नजर आता. There is no CH2 above 60. That means कि हम methoxy को directly ऑक्सीजन इन दो CH2 के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. इनको हमने कहीं और कनेक्ट करना है. और हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं. एक हमारे पास बेंजीन रिंग है और एक कार्बन है. ठीक है. तो या तो कार्बन के साथ कनेक्ट करें या फिर बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट करें. सो हम एक CH मेथॉक्सी को बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे को कार्बोनिल के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो एक कार्बोनिल के साथ हो गया, मींस एस्टर हो गया, और एक यहाँ पर हो गया. अब जो दो कार्बन्स का चेन है ये कहाँ कनेक्ट करेंगे? ठीक है. सो अगेन इफ यू लुक एट द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, काफ़ी अपफील्ड है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नहीं है थोड़ा सा डाउनफील्ड है नॉर्मल वैल्यू से. तो ये CH2 जो है, एक जाहिर है हमने डाइसब्स्टिट्यूशन करनी है बेंजीन रिंग पे, तो अगर हम कार्बोनिल को डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दें तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी. तो वी कैन नॉट कनेक्ट एनी अदर थिंग, क्योंकि इस तरफ से तो इसके साथ मेथॉक्सी अटैच है. ये कार्बन अगर हम बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट कर दें तो ये एक अलग से मॉलिक्यूल बन जाएगा. देन वी कैन नॉट प्लेस दीज टू कार्बन्स एनीवेयर. ठीक है. तो इसका मतलब है कि इनमें से एक कार्बन बेंजीन रिंग के साथ है और दूसरा जो है कार्बन के साथ. ठीक है. समझ आ गया? यस सर. इट मीन्स के ये जो कनेक्टिविटी है हम इसको चेक करते हैं. इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा. ठीक है. तो अब इसको दोबारा टैली करें विद केमिकल शिफ्ट वैल्यूज. तो हमारे पास दो मेथॉक्सी थे. वी हैव द टू मेथॉक्सी ग्रुप. पहले तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिने. 1 + 6 7 8 9 10 11 कार्बन्स हैं. 3 5 7 11 + 3 14 हाइड्रोजन्स हैं और 1 2 3 ऑक्सीजन्स हैं. मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाइड है. IHT कितनी थी? 5 थी. इसमें देखें कितनी स्ट्रक्चर में? 5 पूरी है सर. 5 है. 4 फॉर द बेंजीन रिंग एंड 1 फॉर द कार्बोनिल. 5 पूरी है. अभी तक तो ठीक चल रहा है. ठीक है. फिर हमारे पास 9
कार्बन सिग्नल्स थे, 2 CH3 के थे, सो वी हैव 2 CH3 ग्रुप्स, 2 CH2 थे, 2 CH2 भी है, ठीक है. Remember, these two methoxy have different chemical shift values. Why? Because look at the surrounding. This is attached to carbonyl, this is attached to a benzene. So usually they will have different chemical shift values. ये जो दो CH2 हैं, इनकी भी chemical shift value different है because one is attached to a carbonyl, the other to a benzene ring. फिर हमारे पास quaternary signals कितने थे? 3 थे, 132, 179 और 194. ठीक है, we had 3 quaternary carbons as well. अगर इसमें भी आप देखें, so we have 1, 2 and 3 quaternary carbons. और CH कितने थे? 2 थे. स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 CH हैं, बट वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 2 CH हैं, इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम होगी, और जो दूसरे 2 CH हैं, इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपस में सेम होगी. So one signal for these two CH groups and one signal for these two CH groups. ठीक. अच्छा, जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स थे, उनके 2 सिग्नल्स थे, और वो यहाँ से कंफर्म है. केमिकल जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू थी, दैट वाज अबाउट 8 हर्ट्ज. तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन्स हो किसी और हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज यूजुअली 8 to 10 हर्ट्ज. ठीक है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑर्थो कपलिंग है या मेटा कपलिंग है. अगर मेटा कपलिंग हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? मेटा कपलिंग की वैल्यू इट्स अबाउट 2 हर्ट्ज. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, और इसके मेटा पोजीशन पे इस तरफ अगर आप देखें, मेटा पोजीशन पे CH है. ठीक है, तो अगर 2 प्रोटॉन्स मेटा पोजीशन पे हों एक दूसरे के, तो वो भी कपल कर सकते हैं इन केस ऑफ बेंजीन रिंग. और उस केस में जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू होगी, दैट वुड बी अराउंड 2 हर्ट्ज. राइट, 2 हर्ट्ज की नहीं है, 8 हर्ट्ज की है. दैट मींस के दोनों हाइड्रोजन्स आपस में ऑर्थो हैं. ये बताएं मुझे कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, why it's not coupling with this hydrogen? मेटा पोजीशन पे है ना, तो इसको चाहिए कि यहाँ से डबलेट दे, और फिर एक डबलेट यहाँ से दे, डबल डबलेट दे. Why it's appearing as a simple doublet? डबल डबलेट नहीं होना चाहिए. सर सेम केमिकल एनवायरनमेंट. सेम है. ठीक है, these two hydrogens have the same chemical as well as magnetic environment. इनका chemical shift values सेम है. तो कपलिंग के लिए जरूरी है कि 2 मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे, तो वो आपस में कपलिंग करेंगे और वो सिग्नल में शो होगा. ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का केमिकल और मैग्नेटिक एनवायरनमेंट सेम, तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम है, तो उसकी कपलिंग आपको नजर नहीं आएगी स्पेक्ट्रम में, सिर्फ इसके साथ नजर आएगी, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट टू दिस हाइड्रोजन. ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी कपलिंग होगी इन दोनों की, एंड दैट वुड बी 8 हर्ट्ज. तो ये दोनों हाइड्रोजन्स इनके साथ कपलिंग करेंगे, तो 8 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट आएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन्स इन टर्न इनके साथ कपलिंग करेंगे, तो इनका भी 8 हर्ट्ज की कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू आएगी. ठीक है, सो वी कैन टैली द स्ट्रक्चर विद द डाटा दैट इज गिवन, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो इस स्ट्रक्चर से प्रूफ भी हो रही है वापस. तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि दिस कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल proposed structure. ठीक है, क्लियर? इसमें Yes, कोई sir. कंफ्यूजन है तो पूछ लें. Then we move on to the next one. सर ये जो 3 बॉन्ड कपलिंग है ना, अगर मेटा पोजीशन के पे कपलिंग हो तो वो तो दूर होने की वजह से कपलिंग कांस्टेंट कम होना चाहिए. देखिए, ऑर्थो जो है उसके साथ कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 8 to 10 हर्ट्ज. और मेटा चूंकि दूर है, दैट इज 1, 2, 3, 4 बॉन्ड कपलिंग. 4 बॉन्ड कपलिंग है, तो उसकी वैल्यू इसीलिए कम है, अराउंड 2 हर्ट्ज है. कभी कभी 2 से भी कम हो, 1.8, 1.7. सर इतनी कम कपलिंग है तो फिर भी शो हो जाती है. यस, तो मैंने आपको एग्जांपल भी कराई थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कपलिंग ट्री, और बल्कि कपलिंग कांस्टेंट कैलकुलेशन जब हम कर रहे थे, उसमें एक एग्जांपल एक डबल डबलेट की थी, एंड उस डबल डबलेट में एक कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 2 हर्ट्ज की थी, इफ यू रिमेंबर.
Yes, sir.